Today we shall deal about the law of friction. कि फ्रिक्शन क्या है और कहाँ पर लगता है और किस परिस्थिति में लगता है, उसके क्या नियम हैं, आज उसके बारे में हम डील करें। इसमें एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर फोर्स F लगता है, तो उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स Fs एंड Fk लगता है। जब स्टैटिक कंडीशन में है तो Fs लगता है और जब डायनेमिक कंडीशन में है तो Fk लगता है। स्मॉल Fs ये फ्रिक्शन फोर्स को इंडिकेट करता है, स्मॉल Fk जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को इंडिकेट करता है। इसकी हम विवेचना इस प्रकार करेंगे। Let a body of mass m at rest on a horizontal table. The force of gravity mg is cancelled by the normal reaction force. Suppose a force is applied horizontally to the body. It is applied force F with the external force on the body. It cannot move. It must move with acceleration F/m. The body remains at rest because some other force comes into play in the horizontal direction and opposes the applied force F. Applied force F comes into play in the horizontal direction and opposes the applied force F, resulting in zero net force on the body. This force Fs parallel to the surface of the body. Parallel to the surface of the body is in contact with the table is known as frictional force or friction. कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वह सरफेस के पैरेलल और नेट फोर्स जो लगा वो चूंकि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर और अपोजिट है तो इसलिए नेट फोर्स जीरो हो गया और जो फ्रिक्शन फोर्स Fs लग रहा है वह सरफेस के पैरेलल लग रहा है। S स्टैंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ये अपने आप काम नहीं करता जब तक कि कोई बाहर से बल न लगे। इसलिए लिखा गया व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फोर्स, इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, कोई स्टैटिक फोर्स या डायनेमिक फोर्स नहीं लगेगा। As the applied force F increases, Fs also increases. मतलब कि ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स F है, कैपिटल F है, वो जब तक लगेगा नहीं, जब तक कोई फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई नहीं हो सकता, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो। इस ढंग से हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टोटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है। अदर इट कम्स इनटू प्ले the moment there is an applied force. As the applied force F increases, Fs also increases, remaining equal and opposite to the applied force up to a certain limit. वो एक certain limit तक ही काम करता है, keeping the body at rest. बॉडी को at rest में रखता है, since it is called a static friction. A static friction opposes impending position. The impending position means that to take place, मतलब कि वो घटना घटेगी but does not actually take place, लेकिन वास्तव में घटता नहीं है, घटना चाहिए लेकिन घटता नहीं है। Under the applied force, if the friction were absent, अगर फ्रिक्शन absent है तो impending position में चेंज आएगा, मतलब यथास्थिति बाद में परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन तो काम करता है। So the limiting value of a static friction Fs
maximum is independent of the area of contact and varies with the normal force n. So Fs maximum or mu s n, where mu s is the constant of proportionality. It is also called coefficient of static friction. Mu s depends on only the nature of surface in contact. So the law of static friction is written as Fs smaller than or equal to mu s n, where mu s is the coefficient of the static friction and n is the normal force on the table or the surface. It is the applied force F exceeds. If the applied force F exceeds, the body begins to slide. अगर F जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एस मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन फोर्स से अधिक होगा तभी बॉडी स्लाइड करेगा. द सरफेस on the surface frictional force that opposes the relative motion between surfaces in contact is called kinetic or sliding friction. जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन में अपोज करता है, उसको हम काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी करते हैं जब वस्तु मोशन में होता है. एंड इज डिनोटेड बाय इट्स काइनेटिक लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन. So it is found to be independent of the area of contact. It is nearly independent of the velocity also. It is satisfied as similar as the law for the static friction. So it can be written as Fk बराबर mu k n, where mu k is the coefficient of kinetic friction and it is empirical relation that is approximately true. It is not like fundamental laws of gravitation, electric force and the magnetic force. It has empirical type of relations and it is approximately true. It is not actually true. It is not exactly true. It is approximate values. So we can say that the law of friction is not like the fundamental law of gravitation and magnetic force and the electrical force law. It is different type of law. It is different type of law. क्या है? It is empirical type of relations that is near about true, not exactly true, actually true. It is approximately true. So the law of friction is called F as maximum बराबर mu s n and F के बराबर mu k n. It is for the static case and it is for the dynamic case. Thus, we can define the law of friction in two terms, in the static condition and in the dynamic conditions. The friction force always opposes the relative motion, not the motion of the body, but the relative motion of the body and surface.